Okay, so we have reached museum which is on my back side, you can see. So विट्ठल टेम्पल से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक ऑटो करना पड़ा जो तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये म्यूज़ियम। सो ऑटो वाले ने मुझसे करीब 150 रुपये लिया है, वो आप देकर आ सकते हैं, या फिर 6 किलोमीटर अगर वॉक करना है, दैट्स टफ इन दिस हीट। इसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे क्वींस बाथ है, एंड उसके बाद रॉयल पैलेस एंड ऑल दोज monuments are there one by one, and after completing all these things we'll be going to Virupaksha temple which is on the way. So यहाँ पे गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इट इज़ एडवाइजेबल इफ़ यू कैरी एटलीस्ट 2 लीटर बॉटल पानी का, जो कि आपको बार बार रिफ़िल करना पड़ सकता है, और करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है अभी अक्टूबर नवंबर के मंथ में भी, तो आप अगर 2 लीटर पानी का बॉटल अपने साथ कैरी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आपको वॉक करते वक्त बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, एंड पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा होगा अगर आप कुछ जूस और कुछ एनर्जी ड्रिंक भी अपने साथ में रखें। सो आई जस्ट हैड माई लंच हियर इन हम्पी। दिस इज़ अ प्लेस being opposite to Archaeological Museum, which is Pink Mango, which is on that side. The food here is really nice, and I like the food, like the thali and like the sitting arrangement which they have. So if you are in this side and near to Archaeological Museum, please have your lunch here or breakfast here. It's a beautiful place in this area. So this is the way to Lotus Mahal and Rani ka Snangar, yani ki Queen's Bed. So I am going there inside, and I'm just showing you some of the clippings of this particular place, and let's see what's inside at this place. Okay. So this is Hajararam temple, which is near Royal Palace or Royal Enclosure. You can see the structure here.
अभी आज का दिन मैं फिनिश कर रहा हूँ विद माई लास्ट टेम्पल विजिट विच इज़ विरूपाक्षा टेम्पल विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। और आज पूरा दिन बहुत चलना हुआ, तकरीबन 7-8 किलोमीटर में चला, थक गया। आई मीन बट it was really amazing to see all the temples in Hampi. Tomorrow I'm going to one last temple which is very famous temple, which is Anjani temple, Hanuman temple, which is on the other side of the river. And for that I have to leave around 9:30, around 8:30, and it will take around 2 hours to visit that temple. And उसके बाद वहाँ से I'll come back and I'll have my lunch and I'll leave for Mumbai because I have a bus around 6:15 from Hospet. I have to leave around 4:30 for Hospet from Hampi because I have to catch my bus at 6:15. आज का दिन बहुत टायरिंग था जैसे मैंने बोला, तो आज मुझे समझ आया कितना चलना पड़ता है हम्पी में, बट इट्स वर्थ। आई मीन इफ़ यू आर इन हम्पी एंड यू आर interested in exploring all these historical monuments and historical places, so it is one of the finest place in India. And I think we are so rich as a culture, we are so rich in culture, and we are somewhere missing out all these things, and we are not giving values to these beautiful things which we have in India. हम्पी रूइंड होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा सुंदर है कि आपको मैं क्या बताऊँ। इफ़ यू रियली लव्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, सो आई थिंक जब आप यहाँ पर आएंगे तो विल गेट टू नो कि मैं किस बेस पर बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। इनफैक्ट आई वॉज देयर येस्टरडे एंड यू कैन सी द प्लेस एंड द स्काई इज़ सो क्लियर, सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ गुड photographs here. So this is Virupaksha temple. I am going inside now and I will share the inside footages if they will allow me the camera inside. So see you guys